We're looking at the most delicious people in the country right now. Can we please make some noise for Shahid Kapoor, for Rashmika and for Kriti Sanon? And can we also promise them we're going to watch Cocktail 2 day after tomorrow? Clap for yourselves. Very good. Shahid, you're looking just like the curious case of Benjamin Button. बहुत बढ़िया लग रहा है आपको देख के. Settle? बट वो आपके लिए है भी नहीं वो चेयर. वो चेयर नहीं है आपके वो लिए. हमारे लिए था. अब हम फिर जमीन पे आ जाएंगे. कोई बात नहीं. हाँ जी सर. जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि ये रिवर्स एजिंग और ये बहुत ब्यूटीफुल जो आप लग रहे हैं, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आपका फॉर्मूला क्या है और आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं. But anything that you want to tell people, because we're really falling in love with you like again and again and again. What do you want to say? Firstly, that Benjamin Button thing reminded me of the fact that we actually had a broken button You just did. before we walked on stage, so we got a bit late because of that. Good afternoon, everybody. How are you doing today? Thank you so much for being here. It's amazing to have all of you here. Good afternoon. We are very excited. अंदर से हम सब बहुत stressed हैं, ऊपर से हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. What to do? This is who we are. No, but thank you for all the compliments, and I would give most of the credit to Anaita, who's sitting right here, who has styled me and made me change my pants 5 minutes before we were moving out, saying, "You're looking too hero today, Shahid. Just look like the character Kunzi." So this is Kunzi, which she has created and written by Love Ranjan and visualized by Homi Arajania. So मैं जो भी लग रहा हूँ, it's because of these people. इसमें मेरा कोई contribution नहीं है. What a nice humble boy. So sweet. And what about this chocolate boy face of yours? वो तुझे देख के आ जाता है ऑटोमेटिक. Ali के लिए तो बस एक ही सवाल आता है. Ali, when you got this role, first question to you was, what song came to your mind? Was it Ya Ali, Madat Ali, or what was it? What was the first reaction Cocktail 2 coming to you? And None of these songs, because No. होमी के दिमाग में सिर्फ अंग्रेजी गाने चलते हैं. Yeah. So इनमें से कोई नहीं था. Yeah. But I was obviously very, very excited. Yeah. Firstly, I think even Cocktail, the first one, was way ahead of its time in the way the characters spoke and the visuals and all of that. It still looks fresh. Yeah. And when I heard the story of Cocktail 2, I just found it so different and so relevant and so fun, and all these three characters were so well written and well, they had their own graph, and they were just fresh. And I think I was missing a film like this. Yeah. I think I've seen so much of like intensity and action and all of that I wanted to see a fresh young film with like just messy characters like we all. the character, the portrayal, the liberation. But I love it. मैं I बोलने वाला love था. मैं बोलने वाला था इसके लिए थोड़ा मास ऑडियंस के लिए सबटाइटल्स डाल दीजिएगा प्लीज. it. Rashmika, हिंदी में सवाल पूछो. हमें हिंदी में हिंदी में बात सवाल- करने की फीलिंग आ रही Let's है. not go there right now. हिंदी में बात करेंगे आज. हिंदी में हम रश्मिका से हिंदी में बात करेंगे. रश्मिका, परफेक्ट टाइमिंग. Thank you. पर I love रश्मिका, it. नहीं चाहिए ही नहीं. मुझे नहीं लगता आपकी हिंदी इतनी बुरी जितना आपको लगता है. आई थिंक आपकी हिंदी बहुत ही माशाल्लाह है. Oh, thank you. इसने- माशाल्लाह वैसे हिंदी नहीं हमने उर्दू है. कुछ but ही ठीक दिन है. पहले गाना एक शूट किया और लिरिक्स आए हमारे पास. लिटरली ऐसे ये व्हाट वर यू ईटिंग, दाल एंड व्हाट वाज दैट, राजमा दाल रोटी एंड समथिंग यू वर ईटिंग. ऐसे खाते खाते इसने 2 मिनट में ऐसे देखा एंड वी वर शूटिंग इन 48 फ्रेम्स व्हिच मींस दैट आपको डबल स्पीड पे गाना पड़ता है. जी. और इसने जाके शॉट दिया और इसने सब परफेक्टली किया. तो आई डोंट बिलीव यू एट ऑल एनीमोर रश्मिका. मुझे लगता है तेरी सच्चाई ये है कि तू कुर्ग में पैदा होने के 13-14 साल बाद गई थी. तू है दिल्ली की लड़की, तुझे पूरी अच्छी हिंदी आती है. इनफैक्ट है ना? मुझे तो लगता तुझे है सब आता है. वो कितना गाना फास्ट actually सीख लिया इसको है. by heart है. इसको पूरा गाना बाय हार्ट है यार. पर वो वाला गाना सबको by heart है. हाँ. वो वाला वो गाना कहता है। वो जिन वो गानों- वाला गाना. वो वाला गाना. जिन गानों की ये तीनों बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये भी बता दे, रश्मिका को देख के ऐसा भी लगता है कि रामायण वाली हिंदी बोलती होंगी, वो वार्तालाप करती होंगी. बट वील गेट टू दैट लेटर. वील गेट टू इट, बट वन डे एट अ टाइम. तू क्रॉस मार्केटिंग करने आई है. नहीं मैं पकड़ लिया नहीं. तुझे. व्हाट? हाँ मैंने सोचा भी नहीं. ये शायद कपूर ही है ऐसे. प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय. प्लीज शब्द मेरे मुंह में मत डालिए आप.
क्योंकि हम केवल हिंदी में बात करने वाले हैं. दैट साउंड्स रॉन्ग बट मूविंग ऑन. यहाँ पे हम दो बहुत ही स्पेसिफिक ब्यूटीफुल गानों के लिए आए हैं गाइज. एक तो ऐसा गाना है जो जीवन भर से ऐसा लगता है हमारे साथ में रहा है. सिंस 2012 इट हैज बीन एन एंथम फॉर योर रोड ट्रिप्स, फॉर योर फेयरवेल्स, फॉर योर फ्रेंडशिप. It's an amazing song and I'm glad you guys are coming back with it. It's called Bandhu 2.0. क्या हम उस गाने को जरा सुन सकते हैं और उससे पहले थोड़ी आवाज कर सकते हैं यार, तालियों के साथ. जैसे शाहिद कहेंगे इस मोमेंट्स में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए बंधु 2.0 के लिए. गड़गड़ाहट, थंडरस्टॉर्म. रश्मिका, you know it already. I think घंटियां बजनी चाहिए यहाँ पर. घंटियां? आली बात कर रही है, कृति बात कर रही है. गाइस, बंधु 2.0 अब चलने वाले. जरा आप एक साइड पे आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं. please, ladies, the chairs that वो have जो been चेयर्स moved to the हटा दी side. गई हैं वहाँ हम बैठ सकते हैं. आप चेयर्स नहीं कह सकते, शायद कुर्सियां कहनी पड़ेंगी आपको. कुर्सी जी. जिस पे हम अपने इसको बिठाने वाले हैं. I know that Shahid, Rashmika and Kriti have been really working hard to promote every song. Genuinely, they didn't have to work so hard because the songs are fantastic on their own. But because all of us are here at the quorum, sorry to say, but sorry, हम तो देख के रहेंगे इन तीनों को साथ में नाचते हुए. क्या हम तालियां बजा सकते हैं प्लीज, और फिर से गाना लगा सकते हैं बंधु 2.0. Tie-dye. Wonder where this fairy came from. She's from heaven. Heart size of the Amazon. Hand steady, hair long. Holding fire in her hands. She starts to dance. Oh, mystical, magical, beautiful queen of the night. वही याद है, हमने परसों ही शूट किया है. हाँ, we shot it day before, I swear. They edited it yesterday and they released it today. We are in shock. Don't play, cut it off, grow back, throw back. Home in the stands, tell me who can send it like that. Who's gonna stop me from giving my all? No way. Pull on my heartstrings and answer the call. Okay. Sunrise up, then she taking it down. Fantana, 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 Which is day after tomorrow. बस शुक्र है, शुक्रवार है. शाहिद, हमें आपसे प्यार है. आप बहुत अच्छा More on नाचते हैं. YouTube now, okay? ये रिलीज हो गया YouTube पे, तो हम ट्रोल नहीं हुए अब तक. शाहिद, my first. बट आई स्वेयर, सच में एक महीने से हम लोग यही डिस्कस करते रहते थे, बिकॉज वी ऑल लव दिस सॉन्ग. Yeah. ओके, लाइक वी आर ऑल फैंस ऑफ दिस सॉन्ग. वी Yeah. डांस टू दिस सॉन्ग. एवरीबडी वांटेड टू डू दिस सॉन्ग. एंड हम हमेशा डिस्कस करते थे, यार ये करते हैं गाना यार, तो पागल हो गए क्या, ट्रोल हो जाएंगे. बट एंड में फिर हमने कहा अभी we want to do it, so we But just had fun. I like the fact that you've actually underlined the fact that troll हो जाएंगे, जबकि आप शाहिद कपूर हैं, आप भूल जाते हैं कभी-कभी. मुझे यार लगता हम है. खुद ही बोल रहे हैं तो अभी तुम क्या बोलोगे? हाँ, ये सच है, ये सच है. My question to Rashmika, not in Hindi, is dedicate करना होता. Sorry. If you had to dedicate Bandhu 2.0 to anybody in the world, and I think I know the answer, but anybody in the world, who would you dedicate it to? I think I'll dedicate it to So sweet. So sweet. Kriti's like, chal hut. I have to give you one more very Yeah. interesting trivia. Yeah. तो जब हम लोग ये रोमांटिक शॉट्स कर रहे थे ना, राउंड ट्रॉली, सो इट वाज इम्प्रोवाइजेशन.
So Kriti gave like a banging shot, okay? She like killed it with the chemistry and all. Yeah? Then Rashmika came and now after one take, she stop, 1 second. So am I supposed to look at him like a friend because this is a friendly song? I said, chal, bhai behni ban jate hain. So it was very cute. It was very cute actually. And as you can see, she killed it So after did that. you finally look at him like But- a friend, yeah. like a brother, like a lover? What? On I 19th saw him June. like Kunzi. On 19th June. No, but actually, that is everybody's memory of this song. You know, I think everybody remembers this song with their friends, having fun, having a blast, and I think that's the vibe of Cocktail. So we just had to do it because we wanted to just have fun and do it, you know. And at the end of it, we really had a blast. So yeah. Yeah, we really did. And we shot it day before yesterday, guys. So it was quite Actually, we wrapped up interesting. yesterday. Yeah, Because we we wrapped went up out yesterday. till early morning. Yeah. And managed to come here and managed to do this song and DJ Wale Babu ko 4 gali deke, but and still managed to do a fabulous job. Guys, it's Bandhu 3.123. Oh. Just my little, but it is Bandhu 2.0. It's out on YouTube. The song will be seen again in the film as well. And I actually, Shahid's already answered this question, but I'll still ask. When you watched this song as a viewer in 2012, what was your first feeling? Kriti, this one's for you as well. What was your first feeling? And now to perform on it, what were the feels? Actually, I had forgotten the film because like it's so long back, but I recently saw it on YouTube. Yeah. And I, not just the song, but I just feel like this was such a refreshing, fresh, happy movie. Yeah. But it was not like a stupidly happy movie. It was well made, intelligent. The characters had depth, even though that they were entertaining. And I feel that even when I see it today, it feels like such a fresh experience. And the song was no different. You know, it was a song that just made you feel happy. And those are my memories with it. You know, it was just that. Just happy times. Yeah. Absolutely correct answer. 10 on 10. Shahid didn't know I was actually giving him marks also.